Very good morning, good afternoon, and very good evening to all of you. Welcome to my channel, Bhanu Pratap Singh Wagad. I hope you all are good and all is well. Everything is nice, fantabulous. Alright. May you have the blessing of God Almighty always, ever, all together with you all. The prosperity, the intelligence, the blessings from the Divine Mother. I hope that is with you always. Okay, so in today's video, I'm going to have a look upon the basic uses of should. Okay, in my previous video, I let you know about the uses of let. Okay, so in this video, I'm going to have a look upon the use of should. Okay, should in Hindi, if you talk about should, कोई चीज आपको चाहिए, करनी चाहिए. ओके, किसी को अगर आपको ये कहना है कि तुम्हें ये करना, ये तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें टाइम पे स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके, तुम्हें टाइम पे अपना होमवर्क करना चाहिए, तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए, तुम्हें टाइम पे पढ़ाई कर लेनी चाहिए. ओके, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें ध्यान करना चाहिए, तुम्हें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, उसको टाइम पे जाना चाहिए, पेरेंट्स को टाइम पे खाना बनाना चाहिए ताकि लेट ना हो. ओके, पेरेंट्स को साइकिल लानी चाहिए ताकि एक्सरसाइज कर सके, लंबाई बढ़ा सके. ओके, मतलब इस प्रकार के कोई भी वाक्य अगर आपको बोलने हो तो वहां पे यूज क्या किया जाता है? शुड. ओके, तो जैसे कि अगर आपको ये कहना हो कि तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को रेस्पेक्ट देनी चाहिए. ओके, यू शुड डू एक्सरसाइज, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए. यू शुड डू मेडिटेशन सो दैट यू कैन गेट कनेक्ट विद गॉड ऑलमाइटी. ओके, यू शुड बिलीव इन गॉड ऑलमाइटी सो दैट देयर कुड बी सम ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी. ओके, यू शुड do your homework on time, you should reach to school in time. All right, you should do exercise, you should ride cycle. Okay, you should run every day. Okay, you should do yoga, तुम्हें योगा करना चाहिए. उसको किसी और के ही इंडिकेट करके आप कह रहे, he should do exercise, he should wake up early in the morning, he should respect her, he should respect him, she should respect her, she should respect him, she should respect to her parents, he should respect his teachers, he should respect her, he should respect him, he should do his homework on time. Okay, he should do exercise. Okay, you should write in pencil so that you can improve your writing. She should write with pen, with Montex pen, okay, so that her writing could be good. इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्य आपके रोज की दिनचर्या में आने वाले इन वाक्यों का यूज इस प्रकार किया जाना चाहिए. खुद को कांच के सामने खड़ा कर दो, जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड टॉक टू योरसेल्फ. खुद से बात करनी चाहिए, जैसे कि मिस्टर भानु, you should improve your English, you are wasting your time, you should not do this thing. If you want to grow in your life, you should have a look upon your English skills, you should polish your English skills so that you can improve yourself and you can stand in front of people so that people can believe that you know English. Alright, you should respect your parents. Okay, you should believe in God Almighty, so you could be always happy, you could be surrounded by the blessings from God Almighty. Okay, you should drive slowly, you should ride slowly, you should wear helmet, here you can use must. You should follow the rules and regulations of the school campus, of the college campus. Okay, you should not drink, you should not take liquor, you should not booze, she should not booze, he should not booze. Here booze is what? Comment, let me know. Okay, you should not be chain smoker, you should not smoke. So here the word which I have told here to comment in the section. Okay, so it's just similar.
which I spoke right now. So you have to tell me in comment section. Alright? The booze is what? They should not take wine, should not take liquor. Okay? ये छोटे छोटे जो यूजेस हैं शुड के साथ में, ये आप यूज करें. ऑलराइट? शुड. और एक यूज होता है शुड हैव. ओके, उसका यूजेस मैं आपको बाद में बताऊंगा. अभी बेसिक शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, यू शुड हैव डन दिस वर्क. विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन. तो आप एक तो लेट का जो मैंने वीडियो बनाया, लेट के यूजेस, लेट मी गो, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी फिनिश इट, तो उसका यूज करें आपके डे टू डे लाइफ में. और शुड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें. ऑलराइट? बहुत जगह पे शुड और मस्ट का भी थोड़ा सा मतलब नहीं कनेक्शन है. आई लेट यू नो व्हेन आई टॉक अबाउट द मस्ट. ओके, तो मैं यहां पे कहूंगा यू शुड इंप्रूव योर इंग्लिश. यू शुड polish your English skills. You should have something about your future. You should worry about your future. Here worry is what? Hurry refers to your alertness of your future. Okay? You should think about your lifestyle. You should look upon your physical aspects. Okay? You should look at your physical attire. How do you look? Alright? You should improve your writing. You should study hard. You should improve your Hindi and English writing. You should have good communication skills. You should pay attention on English grammar, English conversation. Okay? You should be all-rounder so that you can stand front of the people, so they cannot dare to say anything that you are dull. You should work upon your skills. Alright? You should pay attention on artificial intelligence, the skills related to artificial intelligence. You should think about entrepreneurship. तो ये जितने भी छोटे छोटे वाक्य हैं, इनका ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करें. ओके? और ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को बोलेंगे, ऑटोमेटिकली ये सभी शब्द आपके जीवन पे आ जाएंगे. प्रैक्टिस 24/7. थिंक इन इंग्लिश. ओके? यू शुड think in English. You should do practice 24/7. You should speak in English with your parents, your family members, your relatives, your neighbors, whoever is around you. Speak in English with them. Go anywhere, talk in English. Doesn't matter what they talk about you. So you should improve your English. You should think beyond your level. You should dream big. They should dream big. They should think about their future. You should pay attention on your career skills, your career, so that you can sharpen your skills to get the particular career. You should have good mathematics, good science. Okay. You should have some interest to learn English conversation skills. You should have also interest in games. You should go to bed early. आपको जल्दी सोना चाहिए. You should wake up early in the morning so that you could do meditation, could look upon your physical aspects. तो आप देखिए इन शुड के वाक्यों के साथ में आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं. जितना ज्यादा आप यूजेस करेंगे, शुड का यूज करेंगे, चाहिए तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें ढिमका करना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पीना चाहिए, तुम्हें फिजिकल को इतना जबरदस्त करना है, तुम्हें हाइट बढ़ानी चाहिए. मुझे पहले कहा करते थे, बट क्या करें, हेरिडिटी फ्रॉम मदर, ओके, नॉट फ्रॉम फादर. लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान दे दिया. ओके, लेकिन सबने कहा भाई इंग्लिश को अच्छा कर ले. यू शुड इंप्रूव योर इंग्लिश मिस्टर भानु. What will happen to you in future? I didn't know. I could not see my future. I was not far-sighted at all. But with the blessing of God Almighty,
with the blessings of my parents, my relatives, my family members, everyone who was with me and who is with me, they all told me and suggested me, Bhanu, you should work upon your skills. You should polish your English. Okay, तो मैं भी यही कहूंगा आपको, you should improve your English. You should look upon the basic things related to English conversation skills so that you can stand. You can stand somewhere. You can face the stage. You can stand in front of people and you can keep your, you can keep your collar up that you know something. Okay, ये एटीट्यूड, इसी एटीट्यूड के साथ में आपको आगे बढ़ना है. ओके, तो शुड का इस्तेमाल आपको करना है ज्यादा से ज्यादा. ठीक है, और वर्ड मैंने बोला था, यू शुड नॉट बूज. ओके, सो मुझे बता देना. ओके, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करें. अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लिखिए वहां पे, नहीं मजे नहीं आ रहे हैं, कुछ और बदलाव करेंगे. ठीक है, जो बिगिनर्स हैं, जिनकी समस्या है, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास में वातावरण नहीं है, मेरा मकसद है हर उस व्यक्ति तक पहुंचना. और स्पेशल अटेंशन वागड़, इसलिए तो मैंने मेरे चैनल का नाम रखा भानु प्रताप सिंह वागड़. मैंने चौहान नहीं किया. वागड़ मेरा बांसवाड़ा, मेरा डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का एरिया, उदयपुर का एरिया, इसी को तो मैं एक बार यहां के सभी लोगों के ऊपर मैं अटेंशन देना चाहता हूं, जिन लोगों के पास में अवसर नहीं है. एक बार वो सब जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ना शुरू कर दें. तो हर कोई बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, वातावरण नहीं है, आप सबकी जिम्मेदारी बन रही है. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर एवरीवेयर. ओके, एंड इफ यू वांट टू गिव मी सजेशंस, कमेंट देयर. ओके, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें. ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो. और मिलते हैं किसी और सेंटेंस के यूजर्स के साथ में. ओके, जय माता की. खमा.